कश्मीर को जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता है। इसकी कुदरती खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। स्नोफॉल के बाद जब पूरी कश्मीर वादी सफ़ेद बर्फ से ढक जाती है तो ये नज़ारा आँखों और दिल को सुकून देने वाला होता है। वहीं अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो फिर बात ही कुछ और है। कश्मीर में बर्फबारी के दौरान आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। इन एडवेंचर एक्टिविटी में से एक है स्कीइंग। बर्फ़ के बीच स्कीइंग करना एक अलग रोमांच पैदा करता है। आप भी स्कीइंग का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो गुलमर्ग आपका इंतज़ार कर रहा है। सर्दियों का मौसम कश्मीर को सचमुच जन्नत बना देता है। इस मौसम में होने वाली ज़बरदस्त बर्फबारी से ऊंचे पहाड़ और इलाके सफ़ेद बर्फ की मोटी चादर से सज जाते हैं, जिसका एक अलग ही नज़ारा होता है। गुलमर्ग मशहूर टूरिस्ट प्लेस है और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में दुनिया भर से टूरिस्ट स्कीइंग को एंजॉय करने के लिए आते हैं। हम विंटर स्पोर्ट्स स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग की बात गुलमर्ग में करें, ये तो 80s में स्टार्ट हुआ था। तो फिर 1998 में यहाँ पे पहला गंडोला का फेज बना, जिससे इस जगह को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली एज अ स्की रिजॉर्ट। उससे फर्स्ट फेज के बनने से जो स्कीयर्स यहाँ आते थे वो उनका नंबर बढ़ता गया। तो 2005 में फिर उन्होंने सेकंड फेज का एडिशन किया और 2011 में आके उन्होंने यहाँ पे एक चेयर लिफ्ट बनाया। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर 1998 से इम्प्रूव होता गया, जिससे हमारा यूरोप, यूएस, रशिया या बाकी जगहों से लोग आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब जब लोकली, अगर हम लोकल की बात करेंगे तो लोकली इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, irrespective of gender and irrespective of age, we can say that. तो कब ये लोकली फेमस हो गया? देखिए 80s से ही अगर हम बात करें, 80s से भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, कोर्सेज होते थे। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। कश्मीरी स्कीयर्स ने नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, ओलंपिक्स तक गए। रिसेंटली अगर हम बीजिंग ओलंपिक्स की बात करें, यहीं से गुलमर्ग से आरिफ मोहम्मद खान जो थे, ही वाज द ओनली स्कीयर फ्रॉम गुलमर्ग जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन बीजिंग ओलंपिक्स। सो अगर हम एज अ गुलमर्ग एज अ रेसिंग की बात करें कि जिसमें एथलीट्स जाते हैं, वो तो 80s से ही था। तो अगर हम इंटरनेशनली बात करेंगे तो इंटरनेशनल इसका इन्फ्लुएंस कैसा है गुलमर्ग का? तो आप तो हर साल विटनेस करते हो यहाँ पर टूरिस्ट या स्कीयर्स जो आते हैं। गुलमर्ग एज अ स्की डेस्टिनेशन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स माउंटेन स्नो क्वालिटी। जो यहाँ के माउंटेन्स हैं, इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। उसी की वजह से लोग जो डिफरेंट जगहों से आते हैं थ्रू आउट ग्लोब। अगर आप देखोगे यहाँ लोग यूएस से आते हैं, कनाडा से आते हैं, रशिया से आते हैं, यूरोपियन कंट्री से आते हैं और बाकी जगहों से आते हैं। बहुत सारे लोग इस जगह को बहुत प्रेज करते हैं बिकॉज जो यहाँ की एक नेचुरल उनको एक हिल्स मिलते हैं या बेस्ट क्वालिटी स्नो मिलती है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो आप अगर आपकी प्रोफाइल बात करेंगे तो आपने कब स्टार्ट किया है और आपने खुद कहाँ से सीखा ये? एक्चुअली मैंने इनिशियली आई स्टार्ट स्कीइंग विद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, जो गवर्नमेंट फंडेड होता है। मैंने 2-3 साल वहाँ स्कीइंग की। फिर मैंने स्विच किया स्नोबोर्ड पे। आई मेट वन अमेरिकन दैट टाइम, माइकल निक्सन। तो उन्होंने मुझे स्नोबोर्डिंग सिखाई। फिर उसके बाद आई एम इनटू स्नोबोर्डिंग। फिर मैंने स्कीइंग ज़्यादा नहीं की। It has been almost 12 years now snowboarding as a snowboarding instructor यहाँ मैं काम करता हूँ। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी से माहौल खुशनुमा है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर की दोबारा से रौनक लौट आई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्नोफॉल। इस वक्त चांदी की तरह चमकती बर्फ की चादर कश्मीर को अपने आगोश में लिए हुए है। चारों ओर बर्फ का शानदार नज़ारा है जो टूरिस्टों को अपनी ओर खींच रहा है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर सैलानियों की बहार है। गुलमर्ग में स्कीइंग स्लोप पर टूरिस्ट स्कीइंग के मज़े ले रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रुमाना एंड ये मेरा दूसरा दिन है यहाँ गुलमर्ग में। स्की सीख रही हूँ मैं एंड इट्स द सेकेंड डे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ की गाइड्स, यहाँ के ट्रेनर्स बहुत ही अमेजिंग है एंड स्की का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और आप व्यू तो देख ही सकते हैं, इट्स फैबुलस एंड breathtaking। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डू विजिट गुलमर्ग एंड स्की तो ज़रूर करिए, बिकॉज यू विल बी अ प्रो इन फ्यू डेज, और क्योंकि गाइड्स अमेजिंग है। कश्मीर में बर्फबारी का सैलानियों को बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बर्फबारी में स्कीइंग करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। इस खुशनुमा मौसम में दुनिया भर से लोग कश्मीर आते हैं। इन्हीं में से एक है एंगस, जो पिछले कुछ सालों से गुलमर्ग में स्कीइंग कर रहे हैं। अब एंगस ने कश्मीर में अपना खुद का स्की एडवेंचर वाइल्ड स्टोन खोल दिया है। So I started skiing in Gulmarg in 2019 and came here out of chance, and I met some amazing ski guides that were here, some amazing local Kashmiri ski guides that really attracted me to not only to the area but to the region, and basically fell in love with the place and wanted to not only bring other New Zealanders here to experience what I had experienced, which was just the beautiful nature of the Kashmiri people, but that developed into a business plan to really help and develop skiing in Kashmir. So firstly, we looked at the lack of supply of skis and equipment in Kashmir, and what was happening was the world was effectively dumping their old stock, their old skis into India, and that frustrated me because what I saw were incredible skiers skiing on old equipment, things that really other countries were throwing away. So last year we developed a business plan to build a factory in Kashmir and start manufacturing skis here for the conditions and for the Indian people that have really fallen in love with skiing over the last 2 to 3 years. Skiing equipment sales have increased exponentially. And so earlier this year, or at the end of last year, we raised the capital to develop a factory, and it was important for us to get that factory and build that factory rather in Kashmir, in the shadow of the Himalayas, because skis have to be built by skiers, people that understand skis, and so we chose a location that's very close to Gulmarg, and we have very, very passionate business partners that are keen to develop the factory with us over the next 6 months, and we hope to be producing our first skis by the end of this year. So you are going to train snow skiing trainers of Kashmir. So how it will help them to build a kind of good atmosphere of snow skiing in Kashmir locally, if we talk about locally, because over the years so many people in Kashmir, young boys irrespective of like gender, young boys and girls, they are taking part in snow skiing. How it will going to help them? So I think one of the things that we saw was just the sheer passion for skiing, and you can see this right across Kashmir, where in certain locations people are just walking up and skiing, and they are enormously passionate about the sport. But in order to have truly professional skiers, you effectively need to be skiing year round. You need to be skiing 8-9 months of the year. In order to do that, the
local ski instructors here would need to be teaching in Japan or in New Zealand or Australia. And I think the only way to get them there is to train them with international standards. New Zealand has a very robust system, and it's the NZSIA qualification. So we have permission from the New Zealand Qualifications Authority, the NZSIA, to bring ski instructing, international level ski instructing to India. And I think the benefits will be seen in years to come. Like, it's not something where we're going to see a radical change in just 1 or 2 years. This is something that happens within generations. This is something where I started skiing when I was 3 years old, and I'm still learning. पिछले कुछ दशकों में हिमालय की वजह से स्कीइंग एक अवेयरनेस स्पोर्ट्स बन गया है। इस खेल को सीखने और खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए कश्मीर में दूर दराज के इलाके से लोग पहुंचते हैं। गुलमर्ग शहर स्कीइंग के लिए तो फेमस है ही, यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट गोंडोला की सवारी भी करते हैं। गोंडोला केबल कार से देवदार के पेड़ों के साथ वहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। I was a couple of times with the guys after previous snowfall, and I think it was really professional job from all the team who work in this company, and we started with Swiss pilots who really experience it and do amazing job for everyone. Really experienced guides who operate with, I think, international rules, and able to find really good snow, even if it's kind of challenge snowpack after snowfall. So I find this experience is really special for me and for, I think, everyone. First, for me, it's unique because we ski in Himalayas. This is the highest mountain in the planet. Even if you're here in the ski resort, you can be above the clouds in 4,000 meters, and it's amazing scenery. It's first feeling these mountains, how big they are. It's like really special. Second, it's one of the best snow in the planet, I think. Kashmir powder is famous. You should have a little patience for get that, but it's definitely something I can call dream trip and life trip. You better try, because it's really hard to explain and describe what you will feel here. I work in Russia in Sochi ski resorts, called it Krasnaya Polyana. It's an Olympic ski resort, quite big. And every year I feel that it's more and more people who come to ski there. And I like this place because it's still wild, and you can make your first track even in a couple of days after snowfall. I feel more freedom here because here it's more about free ride. It's not about riding in the piste, it's more wild mountains. And I feel myself a little bit more as a free rider, not just, somebody in the ski resort. कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी और सुहावना मौसम देखकर दिल खुश हो जाता है। ज़्यादा बर्फबारी होने से घर सड़क बर्फ की मोटी परत में तब्दील हो जाती है। फिर हाईवे और सड़कों को साफ करने के लिए मशीन से बर्फ को हटाया जाता है। अगर आपको कश्मीर आने का मौका मिलता है तो गुलमर्ग के स्लोप स्कीइंग आपके लिए एक अच्छा और लाइफ टाइम ना भूलने वाला एडवेंचर है। चाहे आप बिगनर हों या फिर एक्सपीरियंस्ड, दोनों के लिए ही अलग फीलिंग महसूस होगी। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क।
तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।